अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन वाज इंडिया कल्चर स्पेसिफिक ब्रांड कैसे बनती है. यू सेड हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंडिया. इंडिया में क्या 3-4 चीजें चलती है ये बताओ. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट इंडिया कि वो दूसरे कंट्री से अलग कैसे और क्या चलता है हमारे इधर. आई थिंक वैल्यू फॉर मनी व्हिच इज कंसिस्टेंट, बट कंज्यूमर्स थोड़ा भी चेंज हो रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट प्राइस, इट इज जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी कि मुझे वैल्यू फॉर मनी देखना चाहिए. दैट्स वन. मैं जितना दे रहा हूँ उतना मेरे को वापस मिलना चाहिए. हाँ, आई शुड फाइंड वैल्यू फॉर मनी इन इट. ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड, अभी इट हैज टू जेन्युइनली सॉल्व अ प्रॉब्लम. आई थिंक ये बहुत ट्रू है, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम एंड मनी टू वेस्ट कम है. Right, we're getting there, like where people will start consuming, but consumption तो बहुत कम है इंडिया में फिलहाल. So people consume when there's a need, right? So if you see, जैसे अभी बताया, all those amazing brands like crack cream that came and genuinely solved for needs, consumers are willing to spend on, right? जैसे पेट सफा, what a product, what a brand, right? पता है इंडियन खाना ऐसा है कि होता है प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट सफा आप खाओ रात को, सुबह को you'll be fine. Solves a real need. Yeah. And so people, and the product says exactly what it does, and so it can scale. So I think that's genuinely second. Third, I think India में we are very very family and friends oriented. Okay. Right? वो बहुत close culture है अभी तक. There's joint families in lots of places. People are tightly knit communities. So products that help you stand out in front of your community. Status. Solve for status in your community. They make sense. Right? Yeah. And those do well. So which is why the Attenborough example saying मेरे घर में 4,000 रुपए का पंखा लगा दिया मैंने, is status for that community. Yeah. So it solves for it. Like US में it doesn't matter, कोई मेरे घर आता ही नहीं है. Right? People don't go to each other's houses. Here people are constantly in each other's houses. Which is why your crockery, your home furnishing, what your fan is, right? You know, India is probably the only country in the world जहाँ fridge hall में रखा रहता है, क्योंकि kitchen में जगह नहीं होती. Right? So your fridge has to look good. That's in India inside. Yeah. So if you look at fridge ads, there are some fridges which will solve for function, but a lot of fridge ads will talk about looks. US में तो आपके inbuilt fridges होते हैं in many places, so it doesn't matter. That's true कि लिविंग रूम में हम लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं वर्सेस अ किचन. And the home interiors guys in India जो interiors का काम करते हैं, you speak to them, they will say living room में people will spend 3 times what they do in the bedroom. Yeah. क्योंकि सारी जनता आपकी लिविंग रूम में आते हैं. बेडरूम टूटा फूटा हुआ doesn't matter, but your living room has to look good. क्योंकि हमको शो ऑफ करना है. No, but we have to stand out. Like that's your status is defined by. Yeah. Have you noticed this pattern? And that's one of the reasons कि हमारे इधर ना बहुत सारी personal wellness चीज़ें नहीं चलती at scale. Because कि if you look at US market, and I'm just pointing it out based on what you said, so correct me if I'm wrong. US में बहुत product होता है, मैं अकेला रहता हूँ या अकेली रहती हूँ इस घर में, तो मुझे क्या फील बेटर कराएगा, मुझे वो चाहिए, तो मैं उसके लिए पैसे ज़्यादा दूंगी या दूंगा. ठीक है, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा क्योंकि मुझे अकेले में क्या बेटर फील कराएगा, मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं बहुत पर्सनल वेलनेस, कामनेस, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरे को ओवरऑल एक फीलिंग बेटर आनी चाहिए मेरे घर में, उस पर मैं बहुत पैसे खर्चा करूँगा. इंडिया में मैं ज़्यादा पैसे खर्चा करूँगा ऑन कि मेरे दोस्त आने वाले में क्या दिखाऊँगा, मेरे परिवार वाले आने वाले में क्या दिखाऊँगा, मेरे XYZ पड़ोसी आने वाले उनको क्या दिखाऊँगा. तो मेरा सारा ऐसे कि मैं दूसरों के सामने एलिवेटेड कैसे फील करूँ, मैं उस पर ज़्यादा खर्चा करता हूँ. I think the difference is closed-in cultures like India, your friends and family make you feel good. That's why you spend time with people because it's a very close culture. तो आपको feel good वहाँ से आ जाता है. And if you're living alone, then you need to entertain yourself in the house. You don't have company, so then your feel goods there are different, and what you spend on is different. Yeah, you know, like one of the therapists I met, she used to crack a joke, and she was like कि US में थेरेपी लगती है क्योंकि लोगों को खुद से बेटर फील करना होता है, राइट? इंडिया में लोगों को थेरेपी देना होता है क्योंकि उनको वो फील बेटर कराता है.
That's a good one. But it's so true, right? It's like हमें बड़ा मजा आता है जब हम दूसरों खुद की लाइफ लगी पड़ी है, हमें खुद को थेरेपी चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसको थेरेपी देने में बड़ा मजा आएगा, जबरदस्ती ज्ञान देंगे बस. Okay, tell me the three things that a founder should have. Founders definitely need a crazy amount of drive, right? Because the value gets created when you're doing something that others don't believe in, right? If everybody else believes in it, सारे कर रहे होते, ये तो होता ही नहीं, right? When we started the Moms company, we had to go and tell manufacturers कि ऐसा product भी बन सकता है with the small list of items. They refused. Like many of them refused to work with us. They said ये हो ही नहीं सकता, तुम पागल हो, right? But you need to have that little bit of drive to actually do very, very different things. Because as a founder, as an entrepreneur, that's where you create value. Right? So ये बहुत clear है. I think second, you have to be very clear कि what you are starting is a team sport. Right? You have to be able to be the captain of the team and take the entire team along with you. ये solo ऐसे नहीं हो पाता. Right? So if you are a solo single founder who actually thrives in being excellent yourself, find a business that works for you. Right? If you are very clear कि you've done work in life where you've done group projects as an example, or you worked with other people, or you know how to get the best out of other people, your chances of success are far higher. And because there's no way that one person can take care of everything in the business. And I think third is you have to have numbers on the back of your hand and know actually क्या चल रहा है धंधे में. Right? I've recently, actually in the last 2-3 years when the markets were frothy, I've met enough people जिनका आइडिया ब्रिलियंट है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, बट धंधे में एक्चुअली क्या हो रहा है और नंबर्स है कुछ अता पता नहीं है. It will always come back to bite you because there are enough people in the chain who want to take you for a ride. Thank you so much ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो.